Hello students, welcome to Law School. In today's particular lecture, we are going to discuss divorce. In the last video, we discussed about judicial separation and the right to the restitution of conjugal rights, which is also known as restoration of matrimonial rights. And we have even discussed that what is judicial separation. So in the continuation of the last lecture, today's lecture is about divorce. So we will discuss that what are the basic grounds for the divorce, right? And how many types of divorce, mutual consent divorce or irretrievable breakdown of marriage. So we are going to discuss all the particular facts and things, and even we will discuss few cases in this regard. So let's start with our lecture. As we all know, divorce is given under section 13. The divorce petition is filed by one party on the grounds mentioned under the provision, and section 13 clause B of the Hindu Marriage Act says divorce petition filed by both the parties with the mutual consent on the ground that they are living separately. So now, what is divorce? The word divorce had been defined, or you can say is not being defined under any statutory provision, but it could be defined as a legal dissolution of marriage. जी हाँ, लीगल डिसोल्यूशन जो आपकी मैरिज की होती है जब, ठीक है, लीगली योर मैरिज इज डिसॉल्व्ड, दैट थिंग इज नोन एज डाइवोर्स. Clear? So, thus a divorce is the seven-lettered word which separates the united couple at their own wish with their own consent. है ना? है तो कहते हैं ये 7 लेटर का शब्द, बट ये ऐसी चीज है जो एक यूनाइटेड कपल को उनकी विश के अनुसार या उनके कंसेंट के अनुसार जो है उनको अलग कर देती है. क्लियर? So, thus divorce can be considered a means to break marriage that happens not just between two individuals but also between two families. जी हाँ, कहते होते हैं कि in India, marriage is the connection of or union of two families. So when divorce occurs, it is not only just between two individuals, but it is a breakdown between the two families. Clear? So, what are the different theories of divorce? The first theory is fault theory. Under this category, marriage can be ended when one party to the marriage is responsible or liable for the offense under the matrimonial offenses done against another spouse. Means जो आपके दिए गए हैं कि what are the conditions for the divorce, वो इसमें आ जाते हैं कि one person is at fault due to which the other party is seeking the divorce. Easy. Now, only the innocent spouse can seek this remedy. The only drawback of this theory is when both the spouses are at fault, then no one can seek these remedy of divorce. तब आपका कौन सा वो कर लेते हैं, म्यूचुअल कंसेंट का फिर वो डिवोर्स जो है फाइल कर देते हैं. So fault theory as नाम suggest कर रहा है, as the name suggests, it says when the offense is done by the one party, one spouse, the other person has a right to to file for the divorce for the faults the other spouse is doing. Clear? For the offenses the other spouse is doing, the other person has a remedy. The remedy is to have divorce from the person. Clear? Now, another theory is mutual consent. Under this theory, the marriage can be dissolved by mutual consent. If both the spouse mutually gives their consent to end the marriage, they can take the divorce. But many philosophers have criticized this theory as a concept because it says, it is very immoral and it just leads to hasty decisions of divorce. ठीक है? But आजकल mostly educated या फिर आप कह लो जिनको फोर्थ थ्योरी में नहीं पढ़ना, वो क्या करते हैं, सीधा म्यूचुअल कंसेंट के अंडर जो है डिवोर्स फाइल कर देते हैं. क्लियर? आगे चलते हैं जी हम. Irretrievable breakdown. According to this theory, the dissolution of marriage happens due to failure of the matrimonial relationship. The divorce can be taken by the spouse as the last resort. That is when both of them are not able to live together. So, when there can't be, the restoration of their matrimonial relationship. ठीक है? So, this is the last step when the
You can say when the spouses follow this last resort, which is the inevitable breakdown of marriage. Ki that marriage is now beyond repair. We can't repair our marriage now. The last and ultimate thing we are left with is divorce. Clear? जब क्या होता है स्पाउसेस में इतनी ज्यादा फ्रिक्शन आ जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाते हैं, दे आर नॉट एबल टू हैव अ गुड हेल्दी मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, देन दिस थ्योरी इज फॉलोड बाय देम कि अब हमारी जो शादी है बियॉन्ड रिपेयर है, हम इसको और रिपेयर नहीं कर सकते, तो बेस्ट डिसीजन हमारा यही है कि हम अलग हो जाए. ठीक है, सो उस दौरान जो है ये वाला स्टेप वो उठाते हैं, irretrievable breakdown of marriage. क्लियर? नाउ आगे पढ़ते हैं कि डिवोर्स के कौन से ग्राउंड्स हैं, ये जो फॉल्ट थ्योरी में आप पे लगते हैं. The grounds of divorce under the Hindu Marriage Act had been stated under Section 13 of the said Act. These grounds are lawfully valid grounds for divorce, and if such circumstances arise, then unfortunately divorce is bound to take place. ठीक है, फिर divorce is bound मतलब फिर तो होगा ही होगा. Clear? So the Hindu Marriage Act is based on the fault theory, which says any one of the aggrieved, जो सफर कर रहा है spouse, वो जो है fault theory के अंडर जो है अपनी divorce की petition जो है कोर्ट में डाल सकता है. क्लियर? सो सेक्शन कौन सा लगता है जी यहाँ पे, इसके आगे सब सेक्शंस हैं. Can approach the court of law and seek the remedy of divorce. Section 13 clause 2 provides the grounds on which the wife can approach the court of law and seek the remedy. तो जो आपका 13 clause 2 है, इसमें सिर्फ वाइफ के पास अधिकार होता है कि जब वो कोर्ट जाए, ठीक है, to seek the remedy. You know Indian law, favors the women more. IPC, you have seen so many different laws are there which are favoring women only. So यहाँ पे भी 13 क्लॉज भी एक दे रखा है, 13 क्लॉज 2 सॉरी दे रखा है, किसके लिए, स्पेशली फीमेल के लिए, विमेन के लिए, कि वाइफ किन सम सर्कमस्टांसेस में जो है डिवोर्स के लिए अप्रोच कर सकती है. इजी? नाउ ये ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के: अडल्ट्री, क्रूएलिटी, कन्वर्जन, डिजर्शन, इंसैनिटी, वेनरल डिजीज, रिनंसिएशन, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ. क्लियर? अब हम चलते हैं इन सब ग्राउंड्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. पहला आपका है जी एडल्ट्री. एडल्ट्री क्या कंसेप्ट है, क्या होती है एडल्ट्री? जब चीट करता है एक स्पाउस दूसरे स्पाउस पे. सो एज एन ऑफेंस इन मेनी कंट्रीज, बट एज पर द हिंदू लॉ द मैट्रिमोनियल ऑफेंस एडल्ट्री इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्राउंड फॉर सीकिंग डिवोर्स. क्लियर? एडल्ट्री मीन्स the consensual and voluntary intercourse between a married person with the another. So this is the married husband and wife. ठीक है, when one of the spouses having the you can say adulterous relationship, or you can say consensual and voluntary intercourse with the other person, this thing is known as adultery. ठीक है, when there is a third person in the marriage. Clear? So what it says, married or unmarried, चाहे ये बंदा married है, unmarried है, that is immaterial. The person should be of opposite sex. Man doing with female and female with man. Now, even the intercourse between the husband and his second wife, that is if the marriage is considered under bigamy, the person will be liable for adultery, because Hindu law only suggests one marriage. Only one marriage is legal in Hindu law. The other marriage, the second marriage, is bigamy. So the person is having a sexual intercourse with his second wife will still be considered as an adulterous act. Clear? Now, the concept of adultery was inserted under the Hindu Marriage Act by the Marriage Laws Amendment Act 1976. So this is the basic concept of adultery. ठीक है जी, तो adultery को रोकने के लिए, ये तो ऐसे तो in many countries it is legal, but in India it is not. It is one of the main ground for divorce. Clear? Now, even under section 497 of IPC, it is punishable. So adultery is a punishable act. Clear? It is a crime in India.
Now, let us see few cases. The first case is Swapna Ghosh versus Sadanand Ghosh. In this case, the wife found her husband with the other girl lying on the same bed, and the neighbor also confirmed that the husband has committed an offense. The wife gets a divorce. Clear? Now see, the husband is involved with some other female. Whether married or unmarried, it is again immaterial in the Hindu Marriage Act. ठीक है, adultery मतलब adultery है इसमें, married है, unmarried है, second wife है, that is none of the business in Hindu Marriage Act. Clear? So the other case is Sachindranath Chatterjee versus SM Nilima Chatterjee. Shrimati मतलब है Nilima Chatterjee. In this case, the petitioner and the defendant were married. After the marriage, the husband leaves the wife in his hometown so that she can complete her studies and go to another city for work. He visited twice or thrice a month to meet her. Later, he found that his wife has, now in this particular case, wife has committed the offense of adultery. So, that is to involve in sexual intercourse with his own nephew, watchman, etc. Now, the plaintiff approached the court to demand divorce on the ground of adultery, and his petition was accepted and the marriage gets dissolved. So, इस केस में वाइफ ने अडल्ट्री करी है अपने नेफ्यू के साथ, वॉचमैन के साथ एक्सेट्रा, और बहुत है, ठीक है. अब हस्बैंड को पता चल गया है. So on this particular ground of adultery, the husband has seek the divorce and hence his marriage got dissolved on the ground of adultery. Clear? So adultery is the offense in India, but yes, again it is, you know, male bounded. इस ग्राउंड पे आपको डाइवोर्स मिल जाता है, बट फीमेल्स को सजा नहीं मिलती, मेल करता है उसको मिल जाती है. ठीक है ना. चलो आगे पढ़ते हैं. व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एडल्ट्री? वन ऑफ द स्पाउसेस इन्वॉल्व्ड इन द इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन, married or unmarried, of the opposite sex. Intercourse should be voluntary and consensual. Very important point. At the time of the act, the marriage was subsisting. There must be sufficient circumstantial evidence to prove the liability of another spouse. Clear? Now let us see the other points. क्रुएलिटी. अब आपका नेक्स्ट है ग्राउंड क्रुएलिटी का. ठीक है, क्रुएलिटी का इवन 498 ऑफ आईपीसी में भी दिया गया है, बट वो अलग ऑफेंस है. क्रुएलिटी इज कंसीडर्ड अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स. क्लियर? सो द कंसेप्ट ऑफ क्रुएलिटी इंक्लूड्स मेंटल एज वेल एज फिजिकल क्रुएलिटी. Physical cruelty means when one spouse beats or causes any bodily injury to the other spouse. But the concept mental cruelty was added as the spouse can also be mentally tortured by the other spouse. So जो आपकी यहाँ पे cruelty है, it consists of two things, physical as well as mental. Clear? So mental cruelty is a lack of kindness which adversely affects the health of the person. Well, it is easy to determine the nature of physical cruelty, but you know mental cruelty की हम मतलब नेचर नहीं डिसाइड कर पाते. बट अगेन क्रुएलिटी का जो ग्राउंड है रखा गया है हिंदू मैरिज एक्ट द्वारा एज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स. क्लियर? अब हम चलते हैं इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं. मेंटल क्रुएलिटी अगेंस्ट हस्बैंड अब वाइफ. देखिए जी, ह्यूमिलेटिंग द हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली. अब वाइफ हर बात में अपने हस्बैंड को ह्यूमिलेट करे, ठीक है, उसकी फैमिली के आगे, फ्रेंड्स के आगे, दिस थिंग विल अमाउंट टू क्रुएलिटी. ठीक है. अंडरटेकिंग द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. अब क्या करे वाइफ, अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा दे हस्बैंड की परमिशन के बिना, उसकी कंसेंट के बिना, इवन दैट थिंग विल अमाउंट टू क्रुएलिटी. ओके. द अनदर इज making false allegations against him. Very important, false allegations. Denial of marital physical relationship without a valid reason. ठीक है. अब उसके साथ कोई मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रख रही है, कोई रीजन भी नहीं बता रही है वाइफ. दैट थिंग विल इवन अमाउंट टू क्रुएलिटी अगेंस्ट द हस्बैंड बाय वाइफ. क्लियर? नाउ वाइफ इज हैविंग एन अफेयर, वाइफ इज लिविंग अ वेरी इमोरल लाइफ, देन constant demand of money from the husband again and again, इतने पैसे चाहिए, उतने नहीं चाहिए, whatever. This thing will also amount to cruelty against husband by wife. Now, aggressive and uncontrollable behavior of wife, even this will amount to mental cruelty.
Now ill treatment of the husband to the husband and his family will also amount to cruelty by his wife. ठीक है जी, ये केस है, देखो आप एक बार केस को, बलराम प्राजापति वर्सेस सुशीला बाई. In this case, the petitioner filed a divorce petition against his wife on the ground of mental cruelty. He proved that his wife, that behavior with him and his parents was very aggressive and very uncontrollable at many times, and she has filed a false complaint against him. ठीक है, the court accepts the petition and grants the divorce on the ground of cruelty. Clear? आगे चलते हैं हम. अब देखिए हमने वाइफ के तो पढ़ लिए कि हस्बैंड की तरफ कौन सी क्रुएलिटी करेगी वाइफ, विच विल अमाउंट टू क्रुएलिटी एंड विल अमाउंट टू डाइवोर्स. अब हम पढ़ते हैं कि वाइफ के अगेंस्ट क्या क्या कर सकता है हस्बैंड जो क्रुएलिटी अमाउंट करेगा. पहला, वाइफ पे मतलब वाइफ पे झूठा इल्जाम लगा दे अडल्ट्री का, डॉरी डिमांड करे. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में. फिर अगेन हस्बैंड इज इम्पोर्टेंट, ही इज अनेबल टू मतलब to have the pregnancy, to have the child, so this thing will again lead to divorce. Forced to abort the child, अब husband force करे abortion कराने के लिए. Then the problem of drunkenness, अब husband बहुत ज्यादा alcoholic है, तो even that thing will amount to cruelty. ठीक है, husband is having affairs, this thing will amount to cruelty. The husband is living a very immoral life, this will amount to cruelty. Aggressive and very uncontrollable behavior of the husband will amount to cruelty. Now humiliating the wife in front of the family and friends will also amount to cruelty by the husband, ठीक है, towards the wife. So these were the pointers when it is done against the wife. Now next ground is of desertion. Desertion means permanent abandonance of one spouse by the other spouse without any reasonable justification, or you can say without consent. In general, this is rejection of the obligations of marriage by one party. ठीक है जी, अगर एक पार्टी बिल्कुल रिजेक्ट कर दे, ठीक है, अबंडन कर दे एक स्पाउस को, तो वो क्या कर देते हैं, डेजर्शन का नाम लग जाता है, ग्राउंड बन जाता है. एसेंशियल्स क्या होने चाहिए, परमानेंट अबंडन. ये मोस्टली एनआरआई केसेस में देखा जाता है ये चीज. ठीक है, शैम मैरिजेस तो होती है, डेजर्शन का भी एक मेन पॉइंट जो है वहां पे देखा जाता है. चलो जी, परमानेंट अबैंडनमेंट ऑफ द अदर स्पाउस, रिजेक्शन ऑफ द ऑब्लिगेशन ऑफ मैरिज विदाउट एनी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, no consent of other spouse. So these are the essentials to show the desertion. Clear? Now this is the case of Bipin Chandra Jai Singh Bhai Shah versus Prabhavati. In this particular case, the respondent leaves the house with the intention, यहाँ पे उसकी साफ साफ intention दिख रही थी, मेंजरिया उसका था कि he is there going to abandon his wife. Later the wife approaches the court. Clear? But the defendant, what he has done, he proved that even though he left the house with the intention to desert, but he tried to come back and he was prevented from doing so by the petitioner. Here the defendant cannot be held liable for, जब वो वापस ही आ गया, now he will not be held liable for the desertion, though he was having the intention at that time, but he came back. ठीक है, so that is why court said ये अब desertion नहीं होगी, कि there is no permanency to it. Very simple thing, Now conversion, again important point here, you can say ground for divorce. If one spouse converts his relation to any other religion without the consent of the other spouse, ठीक है, then the spouse can approach the court and seek the remedy of divorce. Illustration देख लीजिए, हिंदू वाइफ, ए हिंदू वाइफ है, सॉरी ए हिंदू है, उसकी वाइफ बी है, ठीक है, they have 2 children. One day A went to church and converted to Christianity without the consent of B. Here B will approach the court and seek for divorce on the ground of conversion. ठीक है, conversion के behalf पे we can seek divorce. Now the case is Suresh Babu versus Leela. In this case, the husband converts himself into Muslim and marries another woman. Here the wife Leela filed a case and demanded divorce on the ground of conversion without her consent and cruelty. ठीक है जी, दूसरी शादी के चक्कर में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वाइफ को बिना बताए, फर्स्ट वाइफ को,
So this thing will amount to what? This thing will amount to divorce only because it is a valid ground for divorce. Clear? Now, next step, insanity. Insanity means when there is a person of unsound mind. Insanity as a ground of divorce has the following two requirements. पहली है the respondent has been incurably of, मतलब उसको हम क्योर ही नहीं कर सकते अनसाउंड माइंड से, ठीक है. दूसरा, रिस्पोंडेंट क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली और इंटरमीडिएटली मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है और ऐसी उसकी कंडीशन है उस एक्सटेंट तक है कि मतलब उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है. द पिटिशनर कैन नॉट रीजनेबल बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट. एक तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, एक ऐसे कि कॉन्टिन्यूसली या थोड़ी थोड़ी इंटरमिटेंटली उसकी जो कंडीशन है बारी बारी दिख रही है और उसके साथ कोएग्जिस्ट करना इज डिफिकल्ट फॉर द पिटिशनर. क्लियर? सो केस है विनीता सक्सेना वर्सेस पंकज पंडित. In this particular case, petitioner has filed a case to get the divorce from the respondent on the ground that the respondent was suffering from paranoid schizophrenia, which means a mental disorder. She came to know this after her marriage. Here the court grants the divorce on the ground of insanity of the husband. Clear? Now, leprosy is another thing. It is an infectious disease, ठीक है, of the skin, mucous membrane, nervous system. It is transmitted from one person to another. This is considered to be a very valid ground for the divorce. And this is the particular case, Swarajya Lakshmi versus Gigi Padma Rao. In this particular case, the husband has filed for granting the divorce on the ground of leprosy. He claimed that his wife is suffering from this incurable disease and he has that experts reports with him. Now, here he succeeded in getting the divorce on the ground of leprosy. Clear? Now, another is venereal disease. Under this concept, if the disease is communicable form and it can be transmitted to the other spouse, then this can be considered as a valid ground for divorce. Clear? Illustration देखिए जी, A and B married on 9 December 2011. Later, A suffered from a venereal disease and it is incurable. But also a chance that B can get infected by that disease if she lives with A. Here B can approach the court for the dissolution of marriage. So if one person is having some communicable disease which can't be cured, or you can say which can be transmitted from one spouse to the other person can have the divorce on this particular ground of venereal disease. Clear? Now, next, renunciation. Again important, इस पे बहुत बार जो है आपका क्वेश्चन बन के आ जाता है. It means when one spouse decides to renunciate the world and walk on the path of God, then the other spouse can approach the court and demand the divorce. In this concept, you know, the party who renunciates the world is considered as civilly dead. ठीक है, civilly dead उसको मान लिया जाता है. It is a typical Hindu practice and is considered as a valid ground for divorce. Illustration देखिए जी, A and B got married and lives a happy life. One day he decided to renunciate the world and B has the right now to approach the court and seek the remedy of divorce because he will be civilly dead. Clear? Next is presumption of death. इस पे भी आ जाता है केस, 7 years करके पूछ लेते हैं कितने साल की presumption होनी चाहिए डेथ की. So ये क्या केस होता है, पर्सन क्या करते हैं, presume to be dead if the family or his friends of that person does not hear any news about the person alive or dead for 7 years. So 7 years के लिए देखना होता है. It is considered as a valid ground for divorce, but the burden of proof is on the person who demands the divorce. ठीक है, burden of proof अब उस पे होगा, उसको जो है कोर्ट में प्रूव करना होगा that the other person is dead. Clear? Illustration देखिए जी, A was missing from the last 7 years and his wife B does not get any news about him of being alive or dead. Here B can approach the court and ask for the divorce. Clear? आगे चलते हैं. Now the concept of divorce with mutual consent, ये आप किस में होता है, 13B में होता है जी, section 13B of Hindu Marriage Act. So in this under section 13B, the person can file for the petition of divorce by mutual consent of both the parties. If the parties want to dissolve their marriage as a mutual consent, are required to wait for 1 year
फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। सो यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट कंडीशन क्या है, 1 साल वेट जरूरी होती है, ठीक है। दे हैव टू शो दैट दे आर लिविंग सेपरेटली फॉर 1 or more year and are not able to live with one another। 1 साल की मैरिज, उसके बाद वो प्रूव कर दे कि हम जी एक दूसरे के साथ जो है नहीं रह सकते। क्लियर, आगे चलते हैं, हम देखते हैं। नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स विद इन, यस ये इंपॉर्टेंट है। ओनली अंडर सर्टेन ग्राउंड्स यू गेट डाइवोर्स under in 1 year, but under section 14 no court will entertain the petition of divorce within 1 year of the marriage, but can be entertained if the matter is related to bigamy and where the consent of the spouse was taken through misrepresentation, fraud या undue influence। clear? so next is remarriage of divorced person, ये section 15 के अंदर दे रखा है। after the marriage gets dissolved and no further petition was filed by any of the spouses against the order of the court and the time for appeal has been expired, at the time it is assumed that the both spouses are satisfied and the divorced person can remarry। clear? the other person can remarry now। so एक बार हम एडल्ट्री के कुछ सेक्शंस को जो है हमारा सेक्शन है जो हमारे सीपीसी आईपीसी के साथ रिलेट करता है, एक बारी हम उसको भी देख लेते हैं जी। एडल्ट्री आपका डिफाइंड है 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज 1, ये क्राइम है इंडिया में, मैंने आपको पहले ही बताया था 497 सेक्शन ऑफ आईपीसी में ये दिया हुआ है जी। सो इट इज डिफाइंड whoever have a sexual intercourse with an individual who is and whom he knows or he has a reason to accept to be his wife of another man without the consent or intrigue of the person, such sexual intercourse not adds up to the offense of rape but will be blameworthy of the offense of adultery and will be punishable with the imprisonment for a term of 5 years or fine or both। clear? now केसेस देखो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट केस है जी जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। बट उससे पहले हम ये बता दें, वाइफ जो है कभी भी अबैटर के लिए जो है पनिश नहीं होती। हाउएवर जो इसके साथ हमने कौन सा सेक्शन लिंक करना है, 198 क्लॉज 2 ऑफ द CRPC which deals with the prosecution for the offense against marriage। so इस केस में क्या हुआ था, 497 section of the IPC Joseph Shine versus Union of India, it was read with the 198 clause 2 of the CRPC together constitute a legislative packet to deal with the offense of adultery and had also been unconstitutional and thus it is also been struck down by the Supreme Court। तो उस केस में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। बट ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर, आगे चलते हैं हम क्रुएलिटी के ऊपर। क्रुएलिटी का सेक्शन है जी आपका 13(1) सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2। इट स्टेज, अब मैंने बताई है क्रुएलिटी क्या होती है, मेंटल फिजिकल दोनों तरह की होती है, ठीक है। इट इज ऑल्सो क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A ऑफ IPC which states that cruelty by the husband or the relative of the husband of the woman or wife। clear? so यहाँ पे देखो सीधा सीधा जो है हस्बैंड की तरफ से जो वाइफ के खिलाफ, सॉरी वाइफ के थ्रू, मतलब हस्बैंड करता है वाइफ के लिए क्रुएलिटी, ठीक है। तो ये जो है आपका 498 में है कवर। अब हम देखते हैं, कहते कोई भी विलफुल बिहेवियर हो जाए या फिर नेचर की जो लेडी है शी इज गोइंग टू एंड हर लाइफ due to grave injury, ठीक है, and harassment of the woman where such harassment is with the end goal of pressuring her or any individual identified with her to fulfill any unlawful need, property। see it is 498 is related with the dowry death also, ठीक है। सो क्रुएलिटी ये सब इंटर रिलेटेड है और इसके साथ आपका कौन सा सेक्शन बढ़ा जाता है एविडेंस का, 113A, ठीक है। So it is linked with 113A that such brutal acts are committed where an individual wants to end his or her life is bound to be considered as a basic ground for divorce। punishment कितनी हो जाती है, 3 years or with fine or both। clear? so अदर फॉल्टी ग्राउंड्स कौन से हैं, कन्वर्जन का मैंने बताया ही है, इसके लिए भी बहुत फेमस केस है जी आपका लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, ठीक है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था, जजमेंट
it violates the fundamental right to life and liberty and freedom to practice any religion which is enshrined in an Article 20, 21, 25, 26 of Indian Constitution. ठीक है? So the court held that the contention of the petitioner that the judgment of Sarla Mudgal amounts to the violation of freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion which is guaranteed by Article 25 and 26 of the Constitution. Right? So they said it is far-fetched and is alleged by those who hide behind the cloak of religion to escape the law. वही होता था. अब क्या करते थे, रिलीजन में चेंज हो जाते थे जस्ट टू एस्केप द लॉ ऑफ बाइगैमी. सो लिली थॉमस केस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड जोसेफ शाइन वाला केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो आपके ऐसे केसेस हैं डाइवोर्स के जो बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं. क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं. कोर्ट ने आगे फर्दर ये कहा कि जो आपको फ्रीडम मिल रही है आर्टिकल 25 में कॉन्स्टी के, वो फ्रीडम ऐसी है जो आपको इनक्रोच करती है, मतलब वो आपकी जो ये फ्रीडम है आपकी इनक्रोचमेंट नहीं करती. आप जो आपका मन है वो करो, बट अगर आप लॉ से बचने के लिए इसका सहारा ले रहे हो वो बात जो है वो गलत है. Clear? So the petition also claimed that making converts liable for committing polygamy would be against Islam. मैंने आपको अभी समझा के हटी थी ये बात कि आप लॉ से बचने के लिए, बाइगैमी से बचने के लिए रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हो, फिर कह रहे हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि वी हैव राइट ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, बट नो, दिस थिंग विल नॉट बी कवर्ड. Clear? So the apex court observed that the ignorance of petitioners and rightly said even under Islamic law, purity of marriage is upheld by Prophet Muhammad. The interpretation of Islamic law in the modern sense would never allow such acts in their religion. So Islam is progressive, pious and respected religion that cannot be given a narrow concept which was done by the petitioners. Clear? सो लिली थॉमस वेरी इंपॉर्टेंट केस. आ गया जी आपके अनदर वाइफ स्पेशल ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स. सो इफ द हस्बैंड हैज वन और मोर वाइफ लिविंग इन द सेम टाइम. सो ये मैंने आपको बताया था, अब हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे 13 सेक्शन जो सब क्लॉज 2 है उसके अंडर की वाइफ के पास कौन से अधिकार है कि वो वाइफ के पास ये सिर्फ कि जब वो हस्बैंड से डिवोर्स मांग सकती. तो पहला ये है कि अगर हस्बैंड हैज वन और मोर वाइफ्स लिविंग एट द सेम टाइम. Clear? So if the husband has one or more wives living after the initiation of this act, wife may exhibit an appeal for divorce under 13 subclause 2. Just constraint on the right wife who has applied for divorce under this provision is that other wife ought to be alive. दूसरी वाइफ उसकी जिंदा होनी चाहिए उस टाइम पे, और पिटीशन जो है उसको पता होना चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ द अदर वाइफ इन द हस्बैंड वाज नॉट लायबल टू द क्रुएलिटी. अगला है जी पॉइंट पोस्टपोनमेंट एज लीडिंग इंडक्शन ऑफ appropriation interview or the lack of concern in the wedding incorrectly, which are the cases 13 clause 2. Then the right of divorce given to the wife does not rely upon the behavior before the beginning of the act. The presence of the first wife at the hour of execution ये जरूरी होता है, ठीक है. और ये proof and reality might be gathered from different realities for the situation. इससे मेन पॉइंट आपने क्या देखना है, यही चीज देखनी है कि husband has one or more wife at the same time and the other wife, both wives are living. Clear? So another point is if the husband is guilty of rape, sodomy and bestiality after the solemnization of marriage. So ये भी एक अधिकार दे रखा है जी वाइफ को. So it is under section 13 clause 2 sub clause 2. ठीक है जी. इस पे क्या होगा, on ground of rape, sodomy, bestiality submitted on her by the husband. Rape is additionally a criminal offense and characterized under section 375 of the IPC. Clear? So a man is said to commit rape who had intercourse with a lady without wanting her, without her consent. So this thing will amount to what? Rape only. So which is obtained by placing her in dread or hurt. Thus, when wife gets to know that her husband did such act, she has a special power to dissolve the marriage by letting him free. अगला है जी sodomy is committed by an individual who has sexual intercourse with an individual from the similar sex or with a creature or has
non-coital carnal copulation with an individual from the contrary sex, bestiality implies a sexual association by a person against the request for nature with the creature. ये दो चीजों के अगेंस्ट भी जो है फाइल कर सकती है फीमेल, ठीक है। सो जो अगला है आपका मेंटेनेंस का है अंडर सेक्शन 18 रेड विद 125 ऑफ सीआरपीसी, क्लियर। सो मेंटेनेंस सेक्शन 18 है हिंदू मैरिज एंड एडॉप्शन एक्ट का, मेंटेनेंस एक्ट का डिक्री होती है वाइफ की मेंटेनेंस की 125 सीआरपीसी, ठीक है, which is passed against the spouse. The wife is qualified to present a divorce petition which would be based on the fulfillment of two conditions of the divorce. In the first place, she was living separately, and beside it, after passing the order or decree, there has been no cohabitation. पहला जी ये, और उसके बाद उनके बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं है फॉर वन टाइम ऑफ पीरियड, तो इन केसेस में भी जो है उसको डिवोर्स मिल सकता है, क्लियर। सो in some situations the wife got married before attaining the age of 50. Such age of a later bride will be understanding of what marriage actually means and what are the duties, what are her obligations, you know. So she has a right to revoke her marriage at the 18 years. So till 18 years, जब वो 18 साल की होगी, so she has the option of voidable, चाहे वो अपनी मैरिज को void करे चाहे वैलिड करे, ठीक है। द वाइफ इज गिवन एन ऑप्शन कि चाहे आप शादी रखना चाहती हो कि तोड़ना चाहती हो, क्लियर जी। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है जी डिवोर्स, हमने जो लास्ट जुडिशियल सेपरेशन करा था कुछ हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनके। पहला है ये अवेलेबल है सेक्शन 13 में, जुडिशियल सेपरेशन आपका 10 में दे रखा है, डिवोर्स 13 में दे रखा है। ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोर्स इज टू एंड द मैरिज, जबकि जुडिशियल सेपरेशन का ऐसा कुछ नहीं, इट इज मेयर सस्पेंशन ऑफ मैरिज, ठीक है, और इट कैन गो टू द लाइफ टाइम ऑल्सो, सो इट इज जस्ट अ टेम्पररी फेज, इट इज नॉट द परमानेंट रेजोल्यूशन ऑफ द मैरिज, ठीक है जी। अगला पॉइंट देखते हैं, डिवोर्स कैन बी इनिशिएटेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑफ मैरिज ओनली, 1 साल खत्म होगा तभी होगा, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल सेपरेशन जो है इट कैन बी क्लेम्ड एट एनी टाइम आफ्टर मैरिज। अगला पॉइंट है पार्टीज कैन रीमैरी आफ्टर अ डिवोर्स, और जुडिशियल सेपरेशन जो है उसमें कुछ रीमैरिज की पॉइंट ही नहीं होती क्योंकि उनकी मैरिज खत्म नहीं होती, दे आर जस्ट लिविंग सेपरेटली, क्लियर। सो 2 जजमेंट प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड फॉर अ डिवोर्स, one is when the petition is filed and the second is after the post of 6 months, because 6 month टाइम पीरियड देते हैं जी कोर्ट फॉर देयर यू नो कंसाइलमेंट, होती है ठीक है, नहीं तो फिर आपका फाइनल जो है डिवोर्स लीगली डिवोर्स मतलब आप मैरिज आपके डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद 1 जजमेंट प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड फॉर जुडिशियल सेपरेशन, इसके सिर्फ 1 जजमेंट प्रोसीजर है, ठीक है। सिंस द डिवोर्स ऑर्डर इज साइंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्रुप्स ऑफ रिकंसाइलिंग, ठीक है, एक बार ये डिसॉल्व हो गई फिर उसके बाद रिकंसाइल की जो चीज है नहीं रहती, जबकि इसमें क्या जुडिशियल सेपरेशन जब हो जाती है एक रिकंसिलिएशन पार्टी का जो स्कोप है वो हमेशा ही रहता है, because it is not a permanent dissolution of marriage, it's a temporary phase which can go to the lifetime with the spouse, both the spouses husband and wife are just you know not living together, they are living separately, clear. So that is known as judicial separation. So that was all today about divorce and judicial separation. Hope you have understood the concept of divorce, then what are the grounds, what are the theories of divorce and what are the important cases related to it, ठीक है जी। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो वेरी मच।